माने आमे को टाइप रो डाटा टा स्टोर करिवा वेरिएबल रे सेति पे आमे यूज करिवा डाटा टाइप माने if you imagine that suppose I ask for you that you have to bring the petrol from the petrol pump, then you cannot take any container mo ताको पॉलिथिन ने आनी परिबिनी किबा निज जो लैपटॉप बैग रे आनी होबनी so we require a bottle so for to place the particular thing on a particular place we require some kind of container so that is called as what you can say you have to require a particular container similar way when you want to store the information then you require the you if you want to store particular information first you have to define a data type define the type of data that you have to store in a variable माने मो variable ले को type रा data store करिवि सेटा मो data type रे define data type थोड़ा है मो define करिवि okay the data stored in the memory of the computer can be of many types. Java is strictly type language, which means that Java gives importance to the type checking. So it express and variable of Java can be of different type. The various data type that we are using, one is primitive data type, a reference data type, and abstract data type. हमें तीनटा टाइप रो data type हमें use करें. Data type means what? It defines the type of data that you have to store in a variable. को type रो data में store करिवा. The built-in data type in the Java are known as primitive or simple data type. माने जो data type गुड़ा को already हमारा define है जी ताको को आजीवा primitive data type. There are 8 primitive data types in Java which are further grouped into the following category. Okay, तो हमारा 8 primitive data type होची. गोटे होची integer type, floating point type, boolean type and character type. तो चारटा हमारा group होची integer कौन करे which is store the whole number, floating point can store the fractional number, boolean type store the true and false, character can store the letter and number. तो हमारा integer type रे हमें number store करिवा, floating point रे हमें fractional number store करिवा, boolean point रे हमें true and false store करिवा, character रे number and letter store करिवा. बुझियला? Yes sir. उपांशु बुझियला? Okay. Yes sir. एटा मैं नेक्स्ट पढौची गोटे मिनिट टाइम दियो. Okay, so now check here. So this four category is divided into the 8 type. ये जो चारटा category हमारा रहिला integer, floating point, boolean, character. तो again से divide हैला चारटा रे byte, short, int, long. Integer रे हमारा चारटा रहिला
बाइट रहिला शॉर्ट रहिला आईएनटी रहिला और लॉन्ग रहिला तो एटा हला हमर चारटा डाटा टाइप रहिला बाइट टा हला 1 बाइट शॉर्ट हला 2 बाइट आईएनटी हला 4 बाइट लॉन्ग हला 8 बाइट एटा सबले मन रखियो एटा हमको माने इंटरव्यू रिलेटेड हो किंबा एग्जाम रे हमको आसे एटा बाइट 1 बाइट टा हला 1 बाइट 2 बाइट शॉर्ट हेले आमे जनरली यूज करूचे आईएनटी और लॉन्ग 4 बाइट एंड 8 बाइट आमे यूज करूचे आउ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑल इंटीजर आमे जो भी वैल्यू आमे स्टोर करबा इंटीजर रा सेरा डिफॉल्ट वैल्यू 0 आसीबो 0 0 0 0 आसीबो फ्लोटिंग पॉइंट रे आसीबो 4 बाइट एंड डबल डबल पे आसीबो 8 बाइट सो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ floating point is 0.0 and 0.0 for boolean it is false for boolean it is false for character it is null boolean रा 1 bit boolean माने से हमको true false yes or no ए वैल्यू स्टोर करिवो character हेले से हमको स्टोर करिवो only one letter character हेले one letter आ combination of character हेले से more than one letter से स्टोर करिवो सबले मन रखियो character हेला null boolean हेला false floating point हेला 0.0 एंड डबल हैला 0.0 डिफॉल्ट डाटा टाइप डिफॉल्ट माने होची कोन आमे जदी किछि भी वैल्यू स्टोर न करिबा से वेरिएबल ले ताले को वेरिएबल टा स्टोर हबो डिफॉल्ट जेंति कि घरे आमे गोटे खाइबा पे डिमांड करिबा से आई वांट दिस फूड तो घरे मा कहबे जे आज ये आइटम टा नाही तो यू हैव टू मैनेज इट यू हैव टू मैनेज विथ दिस आइटम में किछि जदी नथले से जिंसरा हम घरे रहितिबो ओके सो दैट इज द डिफॉल्ट आइटम सो सिमिलर वे in the integer if you are not passing any value the default value is 0 for floating point default value is 0.0 0.0 boolean is false character is null okay bujhiyala Yes, sir. Yes, sir. then comes to the reference data type reference data type contain the reference or address of the dynamically created object are also known as non-primitive data type reference data type means it doesn't contain the value of its own it contains the address where your value is stored से कौन करिवो तार address टा रखिवो कोठी मोर value टा अछि तार निजर कोनोसी value रहिवोनी so like you know that array concept is present array store the value through the index number हमें index number through पचरे suppose if I want to know about your friend I ask the number from you मु तुमको नंबर पचारिबी जे ए फ्रेंड रो कोन अछि कांटेक्ट नंबर कोन अछि बा एड्रेस कोन अछि so I contact with that person or friend with you only that is called as what reference type एटा को हमें reference type बोली कहबा it contains the reference or address of the dynamic created object it also known as non primitive data type okay the default value of the variable that is of reference data type is null जदि हमें कोनोसी वैल्यू स्टोर न करिवा डिफरेंट वैल्यू हैला null the example of the reference data type is object and array okay then abstract data type okay एटा बुझियला reference data type बुझियला Yes, sir. then abstract data type it includes the data type derived from the primitive data type and have more function than the primitive data type okay so for example string is an abstract data type that store letter digit characters such as what like slash okay bracket dollar and hash abstract data type it includes the data type derived from the primitive data type and have more function than the primitive data type the primitive data type ro more function अछि for example abstract data type store the letter digit characters such as slash question mark eta सब रहिबो अच्छा abstract data type रो मो एग्जांपल देखौची कोन आसीबो सपोज मु डिफाइन करिवि क्यार क्यार na इक्वल्स टू लेटर मु पास कली ए देन मु जदी गोटे वर्ड स्टोर करिया चाहूची क्यार na देन साइज हला 4 तो जदी मु साइज सपोज 5 दोजी तो दैट आई विल स्टोर जदी मु मोर देन वन एलिमेंट स्टोर करबा को चाहूची तले मु एठी हेलो पास करबी दिस वन if I want to store more suppose mu hello 5 store kari 4 store kari so that means I not able to store any other value okay mu other kichi value it is store karini now
if I want to store the more value mu jodi ato more value mu store karibi then mu से मोर वैल्यू टाको एटी स्टोर करि परिबनी आ आरो गोटे प्रॉब्लम होची जदी मो 5 डिफाइन करूची आ गोटे लेस वैल्यू स्टोर कले एच ई एल एल दैट मींस मोर गोटे स्पेस एटी रही गला जदी मोर गोटे स्पेस एटी रही जाउची दैट मींस व्हाट ए मेमोरी टा जो रही गला गोटे एटा फ्री हेलानी आ गोटे यूजर पे दिस इज नॉट फ्री फॉर द यूजर so it is occupied in the memory so to store that value okay এই जो प्रॉब्लम पे हमें यूज करूचे कोन ना स्ट्रिंग डाटा टाइप सो स्ट्रिंग na तो एबे मु एई जगह रे कोन करिवि मु गोटे लेटर स्टोर करि परिबि as well as मु जदी चाहिबी आठो अधिका लेटर स्टोर करिया पई suppose if I want to store more letters so you can store over there मते एटी कोन से साइज दवा को पड़ियोनी किंतु कैरेक्टर कोन हम आई हैव टू फिक्स ओवर देयर तो सेति पे मु कोन करबी ना दैट आई हैव टू अप्लाई व्हाट यू कैन से लाइक एटा को आजिबा एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप ए जो स्ट्रिंग ता हला एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप व्हिच इज डिराइव फ्रॉम द कैरेक्टर डाटा टाइप माने कैरेक्टर डाटा टाइप रो ही आसी थी माने हमें कोइ परिबा इट इज ए चाइल्ड एलिमेंट आ क्यारटा होची तार बेस एलिमेंट जोटा रहला बुझि पाइलो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट Yes, डाटा sir. टाइप Yes, sir. Keywords available in the Java. Keywords are the reserved word for the language which express the language feature. Keyword cannot be used to the name, variable, constant or classes. So Java is a case sensitive language and keywords should be written in lower cases only. Okay, so Java is a case sensitive language and keywords should be written in lower cases only. So keywords are the reserved word for a language which express the language feature. Keywords cannot be used to name a variable. कौन से keyword मु variable name टाको use करी परिबी नहीं. तो Java is a case sensitive language and keyword should be written in the lower case only. तो keyword टा मु सब बेले आमे lower cases रे use करिवा but some of the cases we are using upper cases. सब बेले माने नहीं जे हमर केवल आमे lower cases रे लिखुचे किछि upper cases अछि किछि lower cases अछि. But you have to remember that while you have to defining a variable जेतल मु variable टाको define करिवि सेते बेले that I have to not follow माने मते ए कीवर्ड टाको अवॉइड करिया को पड़िबो माने कीवर्ड टा जदि हमें यूज करिवा फॉर डिफाइनिंग ए वेरिएबल देन it makes the problem to your program so that while you are writing a program the keywords should be avoided. So there are different keywords are available like abstract, case, constant, double, finally, if, int, new, public, this. So these are the different keywords are available in the program. Okay, so when you go ahead one by one then you will well known of it. तो कहीं के हमें keywords टा use करिवा. So next comes to the variable. A variable is what? Variable is the name that refers to the memory location where some data value is stored. You can assign the different value to a variable during the program execution. So variable is a naming convention where we store the value. So Java allocate the memory to each variable that you use in your program. So Java कौन करे ना किसी memory allocate करे to store the value. Each variable that is used in a program must be declared first. जो भी variable हमें define करिवा first ako हमको declare करिया को पड़ियो. So first you need to declare a variable, then you have to store the value. Each variable that is used in a program must be declared first. Variable is a location. It is a location where you have to store a value. हमें value टाको एटी variable ले store करिवा. Remember some point while defining a variable. एटा तुम्हें आगुरु भी पढ़ीचो. While you have to defining a variable, the name of the variable need to be meaningful. हमें जो भी variable टा define करिवा सेटा meaningful हेतिवा दरकार, short हेतिवा दरकार and without any embedded space or symbol.
कौनसी स्पेस आउ सिंबल रहिबो नै ओके माने सपोज आई वांट टू स्टोर ए वेरिएबल जदि मते वेरिएबल टाको स्टोर करिवार अछि okay suppose I want to store a means define a variable first I have to define a data type so string suppose मते name store करिवार अछि मु name pass करिवे string name okay so next is what like एबे मते कोन करिवा अछि जदि string name मु define करूची ताले name जदि हमें define करछे तो most probably it defined that you have to store a name मते name गोटे store करिवा suppose मैं एठी अमित बोली गोटे value store करली but now another problem is that like मु int name भी define करि परिबी okay जदि मु int name define करिवे name means what to storing a name but एठी जदि मु एठी अमित store करिवी it is a wrong so why my data type is incorrect I define what I define int that means I have to store okay so now see that here I have to define int जदि मु एठी int define करूची that means it is having a problem मु एठी int define करूची माने name means what name means for storing a name but my container is different my हाँ तो int एठी जेहेतु define करछे एटा मते मो पे problem होबो okay int means to store the value so that it's saying that आमे जतरा variable name ता define करिवा it should be short and meaningful and without any embedded space or symbol variable name must be unique variable name must be unique variable name must be begin with a letter or underscore variable name that is a dollar symbol it is not start with any symbol हमें तले variable name ता define करिवा it should not start with any symbol जदि हमको symbol दरकार अछि तले हमें dollar use करिवा और underscore use करिवा so I cannot define the variable like if I want to define student space name so it is a wrong thing you cannot define as student space name if the space is required here you have to use a underscore okay तो मते अंडरस्कोर यूज करिया पड़ियो मो स्पेस एटी देई परिबी नाही आ एटी कोनोसे सिंबल लो से स्टार्ट होबनी सेटा हास हमें यूज करि परिबा नाही okay so हास जदि हमें यूज करिवा that is a problem okay so it should not be start with any symbol okay next is what a variable name should not contain any embedded white space variable name should not consist of a keyword हमरा keyword हबो नाही जेमते कि suppose हमर गोटे कीवर्ड अछि public so it cannot define as a public मु एटी public define करि परिबी नाही so public is a keyword system is a keyword so don't define the variable that start with a keyword थ्रू में स्टार्ट करिबा परिबा नाही variable name in a java is a case sensitive हमें जो variable ता define करिबा सेटा case sensitive suppose मोड ए variable define करूची int x I define so now if I store x is equals to 10 so it is a wrong thing because I define what I define small x यदि मैं small x define करूची so I have to pass here x is equals to 10 I cannot define that capital X equals to 10 so variable name is a case sensitive बुझेला Yes, sir. okay so ita hela amaro normal naming convention okay so next class kali 3:30 re mu nebi so that I will take how you have to write a program ame program kahi kemti lekhiyo first program how each program ro keywords guda ko kono achi taku mu bujhebi hala कोन पे क्लास लिखा होची कोन पे सिस्टम लिखा होची कोन पे out.println लिखा होची एटा हम पढेबी ओके Yes, sir. ठीक है follow